श्रीलंका रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका गस्त को जाइछंती प्रधानमंत्री तीन दिनिया श्रीलंका गस्त रहुछि। एई गस्त समय रे अनेक गुडिये प्रसंग को नै आलोचना हेबार रहिछि। कोलंबो रे पीएम मोदी को श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भव्य स्वागत संबर्धना करिछंती। एथि सहित कोलंबो रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइछि। ए गस्त समय रे दुई राष्ट्र मध्य प्रतिरक्षा शक्ति डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य एवं वाणिज्य समेत विभिन्न प्रसंग में आलोचना हेबा सह अनेक बुझामणा हेबार संभावना रहुछि। श्रीलंका रे एनपीपी मेंटर नेतृत्व में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक क्षमता को आसिबा परे एहा हेउछि प्रधानमंत्री मोदींकर प्रथम श्रीलंका गस्त। शेष थर पई श्रीलंका जाइथिले प्रधानमंत्री मोदी 2019 मसीहारे। गतकाली बैंकॉक रे बिमस्टेक सम्मेलन में जोग देबा परे श्रीलंका रे पहुंची मोदी 2022 मसीहारे। श्रीलंका रे आर्थिक संकट सृष्टि हेबा परे श्रीलंका को पुनः निर्माण रे सहाय्य करिबा पई भारतर पदक्षेप को आगकू बढ़ाई पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर तृतीय कार्यकाल रे श्रीलंका को प्रथम गस्त आरंभ करिबा समय रे श्रीलंका रे तांको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइछि। भारत महासागर अंचल रे चीन रो प्रभाव विस्तार नै चिंता मध्य उभय देश प्रतिरक्षा शक्ति डिजिटल भित्तिभूमि स्वास्थ्य एवं वाणिज्य क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण चुक्ति स्वाक्षर करिबार आशा करा जाउछि। गत वर्ष श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक दायित्व ग्रहण करिबा परे एहा प्रधानमंत्री मोदींकर प्रथम गस्त एवं 2024 मसीहारे जदि देखिबा दिसानायके तांको कार्यकाल आरंभ करिबा परे कोनोसी विदेशी नेतांको द्वारा मध्य एहा प्रथम गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनिया श्रीलंका गस्तरे जाइछन्ते। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित विदेश नीति विशेषज्ञ ए प्रसंग में जोड़ी होउछन्ती। डॉक्टर मिश्र आपनको स्वागत करुछु आलोचना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका गस्त को नहीं आज आम आलोचना करिबा। गतकाली बिमस्टेक सम्मेलन कथा आलोचना करुथिले श्रीलंका गस्त को नहीं आपनकर कोन रहुछे मतामत? Well, this is very important. Okay. Because Sri Lanka and India, apart from being neighbors, have kind of mutual interdependence relationship. ये जो बिमस्टेक फ्रेमवर्क रे देखा हैतिला सबु लीडर मानकर बिमस्टेक कंट्री मान लीडर मानकर इट इज ए फोरम जोतरे की टेक्निकल कोऑपरेशन न कथा कहा जाए अक्रॉस 14 सेक्टर्स एवं ये 14 सेक्टर्स भितरु किछि किछि सेक्टर्स बांटी दिया हैछि एमंग दिस 7 कंट्रीज एवं श्रीलंका से बड़े किछि ता भितरु किछि सेक्टर लीडरशिप नैछि। तेणु श्रीलंका सहित इंडिया कोऑपरेशन is paramount in order to develop cooperation within this BIMSTEC region, in those particular sectors. Chhada bhi, Sri Lanka strategic for India's scheme of things in Indian Ocean cannot be overestimated. It is always there. Tenu jete ja hele India in order to protect tara nijara Indian Ocean ne jo sphere of influence rahichi taku rakhiba pe hele intact rakhiba pe hele श्रीलंकार कोऑपरेशन इज एब्सोल्युटली नीडेड। किंतु वर्तमान जो अल्यूजन्स आसुला या पूर्व जो डिस्पेंसेशन थिला श्रीलंका अनुराग दिसानायक को पूर्व जो डिस्पेंसेशन थिला बिफोर द ट्रबल्ड पीरियड दे वर राजपक्षेस टाइम किछि चाइनीज कोऑपरेशन बा चाइनीज प्रेजेंस रो अल्यूजन्स फॉर इंडिया। So that demanded, set a demand kala ki India, re-strategize its engagement with Sri Lanka. Tenu see re-strategize it hoche phalo je Narendra Modi pahunchile Sri Lanka Colombo re pahunchile ebong important projects partnerships have been signed, particularly in defense. Seta hoche significant because that is seta directly directed against the Chinese presence, so that cannot be hidden anymore. Secondly, in order to counter Chinese presence in Sri Lanka, what a fear bodichi Hambantota port ko Chinese control nijo control neva pare what a fear India bodichi at least in the defense establishment ki Chinese might use this facility against India. So set a warrant kala ki Indians should be present in Sri Lankan soil at least in proportionate to the Chinese presence. Says been Trincomalee, there has been an energy hub जोटा कि इंडिया क्रिएट करिछि
in Sri Lanka सेटा inaugurate करागला एवं तार project शुभारंभ करागला. So this will ensure Indian presence as the Chinese are present in Sri Lanka. Chinese presence को counterbalance करने पे this is the move undertaken, and many more projects are there. So this is the time that the Indian actually kind of re-strategize collaborative जो engagement. It is तार ही प्रतिफलन that Narendra Modi reached Sri Lanka and immediately these important pacts were signed. निहाती भाव में डॉक्टर मिश्र जहाँ कहते भारत महासागर अंचल में चीन प्रभाव विस्तार को नहीं चिंता मध्य उभय देश भितर प्रतिरक्षा हो शक्ति हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो हेल्थ हो वाणिज्य क्षेत्र में अनेक गुड़िए चुक्ति स्वाक्षर कर आशा रोचे चाइना को चेक देवाई अनेक किसी व्यवस्था रोचे तेज सबू भितर जिते कहुचे जितेबले पूर्वर गोटे प्रकार आर्थिक संकट श्रीलंकार देखा भारत से सहायतार हाथ बढ़ाई श्रीलंकार पुनर्गठन आशा बढ़ी तेणु ए सबु भितरे वर्तमान भारत श्रीलंका ठारू किभली भाबरे केउ केउ सहायता आनी परिबो बोली आमे आशा करिबा. नो भारत श्रीलंका ठारू कोनोसी सहायता चाहेनी जोगा चाहे सेटा होची रीजनेबल कोऑपरेशन based on shared national interest that is development of the population of India and Sri Lanka. Values गुड़ा को share करिबा India wants that all the neighbors including Sri Lanka should share India's vision of the region, a developed region, and जो तरह की mutuality रही है, complementarity रही है, and strategic sphere रे yes India definite being a big power in the region, and समस्त जानते India रे strategic competition कोई country सहित ये region रे रही है. Then India's strategic anxiety has to be respected by the Indian neighbors. As no matter someone kete choto ba kete boda, and it needs a two-way approach. It a deepakika approach need करे. India भी bully करेगा उचित में its neighbors को जो टकी India के भी करे नहीं. On the other hand, the smaller neighbors, India जो small neighbors अच्छे South Asia including Sri Lanka, सेमाने भी realize करेगा उचित bringing somebody like China to Indian Ocean definitely is going to cause strategic anxiety in India. That is unwarranted. Same message to Sri Lankan current leadership that is a welcome step. That is what India wants. India chahe strategically that Sri Lanka must respect India's strategic requirements and India's strategic presence in Indian Ocean. That is what is the minimum expectation. Is the only expectation. Okay. इतने ऐसा भी मित्र आउट एक कथा भी आसुची सामना को जे एक शक्ति आवश्यकता पूरण पाई गोटे चुक्ति स्वाक्षर हेबार रहुछि 120 मेगावाट सौर विद्युत केन्द्र पाई मिलित उद्यम रहुछि जाकि जातीय भारतर जातीय तापस विद्युत निगम एवं श्रीलंकार सिलन विद्युत बोर्ड मध्य त्रिंकोमाली रे 120 मेगावाट सौर विद्युत केन्द्र स्थापन पाई मध्य प्रोजेक्ट प्लान करा जाउछि. से कथा हम कहतली त्रिंकोमाली प्रोजेक्ट कथा हम किछि समय आगु नहीं कहतली एटार दुटा एस्पेक्ट अछि. वन इज दैट गोटे होछि जे इंडिया कोऑपरेट करबो श्रीलंका सहित श्रीलंकार एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करबो. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकंड पार्ट ऑफ इट जो स्ट्रेटेजिक पार्ट रहला सेटा होछि जो स्ट्रेटेजिक एंजाइटी इंडिया रे देखा दैछि आफ्टर द चाइनीज टेक ओवर ऑफ हम्बनतोता पोर्ट सेटा को काउंटर करिया पई in order to ensure equal kind of not equal number but equal kind of Indian presence in Sri Lanka. सेति ए प्रोजेक्ट रो परिकल्पना एवं इटी इंडियन एवं श्रीलंकन companies, state owned companies will jointly work. So it's a as I said दी प्रकार एटार यूटिलिटी रही गोटे होची it will meet the energy requirement of Sri Lanka with Indian assistance. Second is it will ensure India's presence in Sri Lanka. डॉक्टर मिश्र अनेक गुड़िए प्रसंग रे आलोचना सह अनेक बुझामणार भी संभावना रहुछि. ये गस्त अनेक गुरुत्व बहन करुछि. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित विदेश नीति विशेषज्ञ सीधा सड़क जोड़ी होते जे प्रसंग रे अधिक आलोचना करुथिले.